Good evening, everyone. Today we are going to learn about Introduction to Microeconomics, is one paper one, and here there will be different units. Today we are going to study the first two units, that is Unit 1, Introduction to Economics and Economy, and Unit 2, that is Demand and Elasticity of Demand. Demand and elasticity of demand is one of the most important foundations of economics, you can say. तो आम आज पढ़िया को जाऊे डिमांड इकोनॉमिक्स रे इंट्रोडक्शन माने कौन आ डिमांड आ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रो माने कौन तार सब जहाँ जहाँ ता कहाँ कहाँ ऊपर रिलेट करूची कहाँ कहाँ ऊपर बेस करिकी से माने फ्लक्चुएट करूचंती से विषय में डिस्कशन करिबा. I will talk in English and I will talk in Odia also. Same thing I will be repeating in Odia. So those who do not understand Odia should not be very afraid of everything because I am not going to miss anything. If the time permits, then I am going to tell everything. Now let us start with this one. That is Introduction to Economy and economy. So there are different definitions, very long. I mean, different types of definitions regarding economics. What is economics? What do we mean by economy? We will go for the Samuelson's in definition, and there are different. I'm just quoting one or two. That is, economics analyzes how a society's institutions and technology affect prices and the allocation of resources among different uses. That is the major definition. That is one of the important definitions of economics. It explores the behavior of the financial markets, including interest rates and stock prices. It examines the distribution of income and suggests ways that the poor can be helped without harming the performance of the economy. It studies the business cycle, monetary policy, unemployment, inflation. Economics also studies the pattern of trade among different nations. Economics also looks at the growth in developing countries and regarding government policies also. Economics also studies government policies that can be used for pursuing important goals. So in a way we can say an economics is the study of our economy from every angle, that is unemployment, inflation, growth of income, development, that is distribution of income, production, consumption, all these things together. That is the idea behind the study of economics. But in this entire thing, we have to give emphasis on something called scarcity, because we know resources are scarce. आमे जानिचु जे आमको सब जिंस सब बळे मिले फ्री को छाडी दियो जोडा का फ्री गुड दे we are not discussing about free goods, we are discussing about those goods which are scarce. So, in that sense, most of the resources in economics or in an economy are actually they are scarce. You have to use them judiciously. You have to choose them. You have to take what proportion of things should be those scarce resources should be used so that it will be used efficiently, or the total output should be maximum. So, we define economics as a science that deals with scarcity. It explains the behavior of different economic units, that is households. From that, consumption comes. Farms, from that production comes. Government, that is G. Government spends money. Government also generates income. So in the economy as a whole, all these households, these are stakeholders. Household हुंतु, फार्म हो किंबा गवर्नमेंट हो किंबा एक्सटर्नल सेक्टर हो, समस्तंकर आमर आमे स्केर्सिटी को फेस करूछु. स्केर्सिटी माने जिनस आम पाखरे कम अछि. So scarcity, there are two basic facts why they are scarce. What is the problem? Wants are unlimited. You तमें सब जानी थी वो करना BA रे पहुँचा. Already जानी थी वो जे wants are unlimited and resources are scarce or means are scarce. तामाने आम पाखे जो जिनस अच्छी आमर desire किंबा wants unlimited अच्छी. किंतु आम पाखे जो साधन अच्छी से साधन उड़िका आमर बहुत कम अच्छी आम पाखे. So human wants are unlimited. They keep on increasing and wants differ in their intensity. कहाँ पे गोटे वांट अधिका बेसी इम्पोर्टेंट, कहाँ पे सही वांटा कम इम्पोर्टेंट, आउ कहाँ पे गोटे वांट अर्जेंट, कहाँ पे लेस अर्जेंट डिपेंडिंग ऑन टाइम. सो इन दिस वे यू कैन से आमे बेसिकली कहबा को रिसोर्सेस कम अच्छी, आमर वांट्स अनलिमिटेड अच्छी,
ताको satisfy କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ scarce resource को केमिति यूज କରିବାକୁ पड़िବ। So scarce means or scarce resources have alternative uses। तमे जदि प्रोडक्ट ए रे यूज करिच प्रोडक्ट बी पई से रिसोर्स अवेलेबल नहीं, प्रोडक्ट बी रे यूज कले प्रोडक्ट ए रे अवेलेबल नहीं पारे। सो डिपेंडिंग ऑन द अर्जेंसी ऑफ योर प्रोडक्शन और मे बी तुमर इकोनॉमी लाइक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है कि सोशलिस्ट इकोनॉमी, सब इकोनॉमी ऊपर डिपेंड करिकी urgency of the production upare depend karibo। So scarce resources have alternative uses। Different societies try to solve these issues in different ways, and that is why the society or the process each society creates a setup that is known as an economy। So, an economy covers the entire set of institutions and arrangements, rules and regulations also, because rules and regulations imposed by government. Otherwise, तमे society चली पारिबनी। There is a kind of तमरा गोटे हेई जीवो पुराना society जेमती माने कौन कहउछन जेमती केही राजा समस्त राजा सेही प्रकार सोसाइटी हेई जीवो। सेथिपई an economy, it is actually the process each society creates, that is a setup. It is a setup this society creates. It covers the entire set of institutions, arrangements, rules, regulations for resolving the basic and permanent problems of an imbalance between means and wants। Means है scarce, limited, scarce माने limited, इमा कम अच्छी, और wants हमर हल्ला unlimited। ता दीटा भितर हमहु सबबळे struggle करिया को पड़े। So the problem of scarcity exists in every society irrespective of the level of development। Yes, so a highly developed country रे भी scarcity अच्छी, कम developed country रे भी scarcity अच्छी। So the economy has to address itself to two issues, that is increase the availability of means, that is increase the resources for satisfaction, and laying down the priorities of the wants। Wants को want को तमे आगो satisfy करिवो। Okay, now next we are coming to the concept of production। Production means we are producing goods and services in the market। तमे जहाँ भी किछि तम घरे देखुच किंबा बाहरे देखुच, these are final produced goods available in the market। TV हला final consumer good, machine tools हला producers good, but goods are produced whether it is consumer goods or producer goods। You have to produce for consumption। Consumption माने नुह जे only for eating purpose। Everything in economics, consumption means consuming a fan, consumption of a fan, consumption of a chair, consumption of electricity, consumption of my service। Consumption word is used where you are actually using or taking help of the other factors of production, and you are trying to find out something else। You are trying to find out something entirely different from whatever was given in the original situation। So transformation of various inputs into output, thereby increasing the want satisfying capacity of the inputs, that is known as production। So this involves labor, human effort, that is physical labor मु जाई कि काम करके करि पारे, or intellectual labor or intangible। One is physical labor, that is labor we are providing, like my service is a labor। I am providing a factor, I am a factor of production। मु provide करूची सर्विस, बट मु किछि काम करूनी, मु कोनसी कागज पत्र किबा पैकिंग फैकिंग से प्रकार काम करूनी, किंतु मु इंटेलेक्चुअल लेवल रे कंट्रीब्यूट करूची। ताहले कोन हला ना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स इनटू प्रोडक्शन। इनपुट रो आउटपुट हवा प्रोसेस टा को प्रोडक्शन कहंती। It needs labor, human labor। Human labor can be mental labor, that is human capital, and it can be physical labor। Okay, so the transformation may be physical, different appearance, and also spatial। Spatial means actually across space। एठी कटक रे गोटे जिंस होची, भुवनेश्वर गोटे जिंस होची, दिल्ली रे गोटे जिंस होची, across space, that is known as spatial। or relocate or transfer the things from one place to another। माइन कोल भितर कोल अच्छी, किंतु बाहर को आसी प्रोडक्शन ले कोल प्रोडक्शन ले तमे अलगा प्रकार तक रिफाइन कला पर कोल प्रोडक्शन होची। सो it is physical, a different appearance, that means appearance will be changed। Second is across space, भिन्न भिन्न जगह रे तारा भिन्न भिन्न यूटिलिटी रहिबो। आमे ट्रांसफर करके गोटे जगह रे आउट जगह को नै कि ताकू आउटपुट अलगा करि परिबा। और
टाइम टेम्पोराल वार्डटा आसछि टाइम रु टाइम रे जदि तुम चेंज है दैट इज सेविंग प्रिजर्विंग थिंग्स व्हिच अराइज ग्रो मेड टुडे फॉर यूज एट ए लेटर डे स्टोरेज एंड लेटर डेट दैट इज स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग तुम स्टोरेज और वेयर हाउसिंग रे जिंस रखिदेल ପରେ ତାକୁ ବିକ୍ରି କଲ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜରେ ଜିନିଷ ରଖିଦେଲ ପରେ ତାକୁ ବିକ୍ରି କଲ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଇଣ୍ଟର ଟେମ୍ପୋରାଲ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ୟୁ ଆର୍ ଚେଞ୍ଜିଂ ୟୁର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଟୁ ମତେ ଖରାଦିନେ ଯଦି ଫୁଲକୋବି ମିଳୁଛି ଦେନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ଟେମ୍ପୋରାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଇନ୍ ଦ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ତାକୁ ଷ୍ଟୋର କରାହେଲା କିନ୍ତୁ ୟୁଜ୍ କରାହେଉଛି ଇନ୍ ଦ ଫ୍ୟୁଚର ସୋ ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ରସ୍ ସ୍ପେସ୍ ଅର୍ ଆକ୍ରସ୍ ମାନେ places and across time. So production is nothing but creation of utility. Creation of utility. Inputs are transformed into output. Now, what are the central problems of an economy? Central problems of an economy basically are what to produce, number two is how to produce, and number three is for whom to produce. Then these are the three major problems of an economy as far as production is concerned. Every economy, the problem they are for them, the problem is first is what to produce, because limited resources, scarce resources are there, so we have to produce on the basis of those goods which are most important in our priority list. So an economy doesn't have enough resources, so it must be selective and decide what to produce and what not to produce. This is known as allocation of productive resources. If some factors of production are employed in the production of a product X, then that those product factors of productions are not available for another product, say Y. Second is how to produce. आम पाखे लेबर अच्छी, कैपिटल अच्छी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अच्छी, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन. आम पाखे टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन भी अच्छी. सो व्हेन द इकोनॉमी इज डिसाइडिंग टू प्रोड्यूस ए पर्टिकुलर गुड एक्स, इट हैज टू वर्क आउट केते लेबर नब, केते कैपिटल नब, केते लैंड नब, सो दैट प्रोडक्शन हेई परिबो. ताले फैक्टर इनपुट मु गोटे लेबर ने कि दीटा मशीन ने भी ना पांचटा लेबर ने कि गोटे मशीन ने भी, दैट डिपेंड्स ऑन, दैट इज नोन एज proportion of factor inputs. So the exact proportion of factor inputs used in the production of goods needs to be decided earlier, irrespective of the size and nature of an economy. So this is known as technique of production of a good. Its production can be labor intensive, technique of production can be labor intensive, can be capital intensive. Labor intensive technique of production कौन ना जोठी बेसी लेबर लागुची कैपिटल अपेक्षा. कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन कौन ना जोठी बेसी कैपिटल लागुची लेबर अपेक्षा. आमर सब कंट्री रे आमर बेसी लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन बिकॉज लेबर इज चीपली अवेलेबल. कैपिटलिस्ट कंट्री, वेस्टर्न कंट्रीज रे किंबा जोठी हाईली डेवलप्ड कंट्री तुम देखिबो capital is cheaper compared to human beings or compared to labor. So an individual producer has to decide about the technique of producing any particular product. So for deciding that to take up that technique, he has to look at the price of the input also. That is price and productivity of alternative inputs. So labor and capital, suppose these two are available, basically these two are used, labor and capital, whenever we are discussing. So he tries to use those inputs in such a combination, labor capital combination ta emti haba dakar se maximum output sethru jemti pauthibo. So his decision is based on then what relative price of labor and capital. Suppose labor price 50 टंका, capital price अछि 5000 टंका, ताले relative price हे गला तमरो PL price of labor by PK, that is price of capital, that is known as relative price of labor. ता माने capital महंगा अछि, labor सस्ता अछि. मु जो एग्जांपल टा देली. सेकंड है relative efficiency of the two inputs. गोटे गोटे काम रे देखिबो labor will produce more output compared to capital. So in that type of situation, whether it is advisable to go for more labor or go for less labor. So decision of a producer is based on two factors. He will look at से देखिबो रिलेटिव प्राइस मते कोटा चीपर होची, दाम कार कोन अछि कोटे दिन, नंबर 1 देखिबो, नंबर 2 देखिबो एफिशिएंसी, लेबर एफिशिएंसी ना कैपिटल एफिशिएंसी को प्रकार अछि.
Third hela for whom to produce, how what to produce, how to produce, and for whom to produce. So all these production should be, after production they should be distributed among individuals and households. So each share of each individual and household has to be determined, and also the quantities of the specific goods and services which comprise that share, that also should be determined. So basically in the market କୋଉ particular ଜିନିଷ ତମେ produce କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କିମ୍ବା ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ସେଟା ଡିପେଣ୍ଡ, ତମେ ରିଚ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଇଁ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବ ନା ପୁଅ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କରିବ, ତମେ ରାସ୍ତାଘାଟ କରିବ ନା, ରାସ୍ତାଘାଟ ତ ପ୍ରାଇଭେଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମାନେ କରନ୍ତିନି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରେ, ତମେ ଗୋଟେ ନୂଆ କାରଖାନା ବସେଇବ ଯୋଉଠିକି ବେଶୀ ଟିଭି ପ୍ରଡକ୍ସନ ହବ, ନା ତମେ ନୂଆ ଗୋଟେ କାରଖାନା କରିବ ଯୋଉଠିକି ବେଶୀ ତମର ମେସିନ୍ ଗୁଡ୍ସ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହବ. So the price of a productive resource is determined by the market forces of demand and supply. So items or goods sold, bought and hired like any other goods or services, those are productive resources. They are privately owned in a market economy, in a capitalist economy, and in a socialist economy. ଏବେ ତ କୋଉଠି ନାହିଁ ଆମର, କେବଳ ରଷିଆରେ ଅଛି, କେତେଟା ଚାଇନାରେ ଅଛି, but they are not actually purely socialist. So in that case what happens, there things are owned collectively by the society. So income of each individual under these conditions is determined by the amount of different productive resources owned and supplied by him to the market at their risk, and their respective prices. ताले मोर इनकम कौन हम, मार्केट रे मोर केते वैल्यू अच्छी, मार्केट रे मु जो प्रोडक्टिव रिसोर्सेस ओन करिछि, सप्लाई करिछि मार्केट रे, ताकु मु प्राइस पाउछि कि नहीं, ता ऊपर डिपेंड करिवो. Now for next we are going to discuss problem of growth. What is the growth means? Actually we have to increase the income. Growth माने standard of living अधिका हवा दरकार, ग्रोथ माने इनकम अधिका हवा दरकार. लोक कहउछन इनकम अधिका होछि किंतु सैनिटेशन भलो नाही, कि रास्ता घाट भलो नाही, कि हेल्थ सिचुएशन भलो नाही. बट व्हाट एवर इज द सिचुएशन, आगो इनकम भलो हेले, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भलो हेले, तापर जे कि तमे देखिबो तमर अन्य मानकर अन्य कंडीशंस गुडा फुलफिल होछि कि नाही. सो एवरी इकोनॉमी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी इज टू इंक्रीज द national income as well as the per capita income. So to increase that, you have to increase the stock of capital. To increase the national income means you are increasing the increasing the products. To increase that, you have to increase the capital stock. So total expenditure is equal to C plus S. From savings actually we get finance, saving is converted into investment is added to capital stock. Investment is nothing but change in capital. So there is need to reduce the share of consumption expenditure. This helps in capital formation. Like for example, ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ y is equal to C plus S, ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ କମେଇବା, ଏଇଟାକୁ ଯଦି ବଢ଼େଇବା, ତାହେଲେ ଆମର ଏଇଟା ବଢ଼ିଲେ ବେଟର. କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି କନଜମ୍ପସନଟା ବଢ଼େଇଲେ, ସେଭିଙ୍ଗସଟା କମୁଛି, ଏଠି ୱାଇଟା ବଢ଼ୁଥାଇପାରେ ଇନକମଟା, ବଟ୍ ଆମକୁ ବେଶୀ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହବନି. ସୋ ସେଭିଂ must be converted into investment. So reduction, consumption expenditure should be reduced and capital formation should be increased. That is the basic idea. Okay, now next question is that what the economy is going to do, whether it is going to choose between public good or private good. Public good तमे जानिଛ, that is there is no principle of exclusion. Private good माने कोन, मु मोर तयारी करछ माने सेटा मोर पूरा पूरी, मु चाहिले काहाकु सेते शेयर देबी, तो that is known as principle of exclusion. That means I can exclude others to enjoy that product if I am producing a product privately. But public good, that is here you cannot restrict the availability of the product to any selected individual. Like park अछि, park तमे कोन कहि परिबो केवल धनी लोक जिबे किबा खाली गरीब लोक जिबे, किबा रास्ता अछि तमे कहि परिबो, रास्ता तो आसी गला तुमर मेरिट गुड रे, तो मेरिट गुड रे आसी गला. सो प्राइवेट और पब्लिक गुड रे फरक होछि, नॉट फरक एक्चुअली, बेसिक फरक होछि प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन. That means in case of private good, the other individuals are excluded
from enjoying that product. But in case of public goods, everybody is allowed. So in this situation that this resources limited hela, ki scarce hela, then an economy cannot have enough of both public and private goods. Dita ka amku dakkar. Private good dakkar, टीवी दरकार मोटरसाइकल दरकार पब्लिक गुड भी हमको दरकार पब्लिक गुड तुम आसो रेलवे डिफेन्स केते जिनस अच्छी से गुड़ाक आसो नेक्स्ट है तुम प्रॉब्लम ऑफ मेरिट गुड्स प्रोडक्शन मेरिट गुड्स एक्चुअली this consumption is considered highly desirable. Their consumption benefits both the user and non-user. Like health and education, they are known as merit goods. So whether the economy is going to produce more hospitals or going to set up more hospitals or more educational institutions or more weapons, they produce more weapons. Like tomorrow Western countries, the product weapon industry is dominated by private industry. They have the motive that is profit motive. There the conflict between public good and private good, that concept comes. Okay, now so what to produce, how to produce, for whom to produce, whether the growth is possible or not, problem of growth is there, growth should be maximum, then the choice between public and private good ए सब होची काहेकि ना resources तुमरा scarce अच्छी and merit good production ये सब गुड़ा तुमरा आसीगला production related problem सब तमें जदि गोटे इकोनॉमी रे आगो को जीवा को चाहुच इकोनॉमी प्रॉस्पर करिया को चाहुच तुमको टोटल गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ाइबा को पड़िबो किंतु तुमरा रिसोर्सेज लिमिटेड अछि सेति पई तुमको भाबिबा को पड़िबो what, how, for whom, whether public or private, whether merit, all these things you have to think about it. Or you cannot just go and produce kar deli, that is the way, that is inefficient use of inputs. That is known as, then that is known as inefficient use of inputs. Now, product PPT, that is production possibility core, PP core. PP core माने PP core basically तमरो होची तमरो limited resources अछि मनकर दीटा goods अछि A और B दीटा goods ही produce करि परिबो गोट सोसाइटी रे ओके यदि एपटे मनकर A good नोच एपटे B नोच सब इनपुट देई देलो एतिकी B हेई परची आ जदि सब इनपुट खाली A रे देई देलो B को देलानी ताले एतिकी हेई परची आ B आ A एटा हला तुमरो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर काहे कि ना तमे जदि अधिका एई जगह रे तमे जीरो A प्रोड्यूस करथलो ओ B अमाउंट रे B प्रोड्यूस करथलो मन कर एम्ति गोटे पॉइंट नबो एई पॉइंट रे तमे कोन करछ ना टिके कमेइलो B एपटे तुमरो A एते बढ़ी गला तमे जदि A प्रोडक्शन रो अधिका करिया को चाहिबो B तुमरो कमिबो so basically productive resources are suitable for the production of both goods A and B or X and Y. In my example here, assumption is there are only two goods X and Y. There are only two factors of production, labor and capital. State of technology is given. Technology change he gale tomorrow production change hejibo. All productive resources of the economy are fully employed or fully utilized. कहीं unutilized है कि रही नांती ये तीनटा हला main assumption. So productive resources are suitable for the production of both the goods. A produce करि परिबो B भी produce करि परिबो so that तमे A रो input काढी देकी B रे नेला B रो input काढी के A produce करि पाला. Then 5 number assumption hela tomorrow no factor of production is considered to be specific in the production of one good alone and inappropriate for the production of the other. तामने तमर जदि land और labor तमे use करछ labor और capital तमे use करछ B रे लेबर कैपिटल दरकार हो A रे भी लेबर कैपिटल दरकार हो तमे कहि परिबनी A रे खाली लेबर नेबी कैपिटल नेबिनी B रे खाली कैपिटल नेबी लेबर नेबिनी तमे सेमति कहि परिबनी so no factor production a factor production is considered to be specific in the production of one good alone and inappropriate for the other. The productive efficiency of the productive resources are only in physical term. Here we are discussing this graph आमे जोटा देले एटा होची physical term OA amount of good A OB amount of good B मु काहे कि एमती B रु एठी कि एमती जॉइन करली एमती काहे कि करलिनी मु तुमको नेक्स्ट स्लाइड रे सेटा हम देखियो सो फिजिकल टर्म हमर गला एठी गोटे एग्जांपल देखो गोटे सोसाइटी रे एलईडी तमरा गोटे अछि एलईडी लाइट मन कर नंबर एनकर एल कंप्यूटर मॉनिटर हला एम ताले तमे कॉम्बिनेशन यदि 30 टा एलईडी करूछ ताले पूरा किछि करूना मॉनिटर ताले लेबर और कैपिटल मिसिले समुदाय 30 टा एलईडी कर परिबे सेमती पूरा जदि एलईडी जमा प्रोड्यूस करिवेनी कैपिटल और लेबर से माने
टोटाली मिसी गले आमर सोसाइटी रे जेतिक अछि इकोनॉमी रे से माने 30 टा प्रोड्यूस करि परिबे। एठी देखो प्रोडक्शन जेतले कमी कमी जाउची 25 20 15 10 5 होउची एठी तमरो प्रोडक्शन बढ़ी बढ़ी जाउची। दिस इज नोन एज मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ता माने ए एग्जांपल रे मु देबी 14 टा एक्स्ट्रा मॉनिटर प्रोड्यूस करिवा पई द सोसाइटी को 5टा एलईडी छाड़ीबा को पड़िबो प्रोडक्शन छाड़ीबा को पड़िबो। सेमती 6टा एक्स्ट्रा एठी 6टा एक्स्ट्रा कंप्यूटर मॉनिटर प्रोड्यूस करिवा पई सोसाइटी को 5टा एलईडी कम करिबा को पड़िबो। गोटे अधिका ले गोटे बढ़िबो। दैट इज नोन एज लॉस ऑफ एम फॉर ईच एडिशनल एल प्रोड्यूस्ड। इट इज एग्जांपल। सो 2.8 1.2 0.2 अछि। एटा एक्चुअली टिके भूल अछि टेबलटा 1 2 3 4 5 गोटे मिनिट एटा 2.8 तो प्रथमे हबनी कौन गोटे मिस्टेक अच्छी देखी दिए गोटे मिनिट बही रे कौन अच्छे मु टाइप कला कौन ହେଇଛି कि देखी दिए गोटे मिनिट 2.8 ना करेक्ट अच्छी 2.8 छाड़ी दिए सर 2.8 तो तमें आम एटा बर्तन देखिबा एटा बर्तन देखिना हम एठू डिस्कशन करिबा एटा एमती आसीबो तमरो एठी देखो एठी एक्सप्लेनेशन ता कोन आ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर एठी 30 नेला मन कर आमे एठी गोटे पॉइंट चूज करले एठी भी जने प्रोड्यूस करि परिबो एठी नैची गुड नेला से कंप्यूटर मॉनिटर एपटे एम नेला एटा एक्स एक्सिस रे वाई एक्सिस रे एल नैची ताले एठी देखो ए जो पॉइंट ता एठी से एतिकी मन को ए पॉइंट आसुची तमरो ए पॉइंट तमरो आसुची धर 15 20 मझी हला 17 10 मन 18 कि 19 आसला मन कर ए पॉइंट तमरो आसला एठी 5 रो 8 ही केते आसला तले ए जो पॉइंट रे से प्रोड्यूस करूची 8टा एम प्रोड्यूस करूची 19टा एल प्रोड्यूस करूची मन कर किंतु ता पाखे जेतिकी रिसोर्सेस अछि से माने आहुरी एपटे ए पॉइंट रे सी रे रहिले बेसी एफिशिएंट हेबे रादर देन ए सिमिलरली एपटे बी रे रहिले बेसी एफिशिएंट हेबे रादर देन ए काहे कि ना एटा होची गोटे इनएफिशिएंट पॉइंट एठी गोटे पॉइंट तमे नेलो माने करो ए पॉइंट ता नॉट अचीवेबल आम इकोनॉमी एमतिया ए पॉइंट ता लेबर कैपिटल मिसिले भी एतिकी आउटपुट प्रोड्यूस करि परिबेनी ता माने एतिकी सॉरी लेबर आउ एपटे हला तुमरा मॉनिटर एपटे हला तुमर लेबर एतिकी प्रोड्यूस करि परिबेनी काना हमर सेतिकी संबळ नाही वी डोंट हैव दैट मच ऑफ इनपुट ए इज नॉट डिजायरेबल बिकॉज मोर इनपुट लेबर एंड कैपिटल विल बी रिमेनिंग अनयूटिलाइज्ड आमे कोन कहू सब गुडा यूटिलाइज होबा दरकार दे कैन प्रोड्यूस मोर एट सी एंड एट बी कंपेयर्ड टू point A. So the economy will stay either at C or at B. So this is the production possibility curve and here marginal rate of transformation is actually decreasing. तुम जमती पढ़ी लॉ ऑफ डिक्रीजिंग डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से प्रकार अधिका अधिका गोटे आउटपुट प्रोड्यूस करिया गले आर आउटपुट तुम जति छाड़िबो से छाड़ीबाटा आस्ते आस्ते तुमरो कम हे जीवो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स तुम पढ़िछ एठी हला सेही कांसेप्ट बट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी इकोनॉमी रे टू गुड्स इट इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस ओनली टू गुड्स देयर आर टू factors of production they are producing the goods all the factors of production must be fully utilized and the production possibility curve will be like this. And what are the characteristics? Downward sloping from left to right तुमको कहली concave काहे कि marginal rate of transformation it implies मुझे कहितली concavity implies increasing marginal rate of transformation. Then can PP curve be a straight line हेई परिबो जेतेबेले MRT constant थिबो हमर सेही केस रे कोन होची ना MRT हमर तुमरो marginal rate of transformation तुमरो बड़ी बड़ी जाउची सॉरी yes बड़ी जाउची गोटे बढ़िले आरटा कमुची so can PP curve be a straight line? Yes, it is constant if we assume that all the resources are equally efficient in production of all goods. The typical PP curve is taken to be a concave curve because it is based on a more realistic assumption that all resources are not equally efficient in production of all goods. तेणु आम से PP curve को आमे concave नौचु. Now does production take place only on the PP curve? is example ता तुमको दउथली देखो ए पॉइंट रे रहिले तमर रिसोर्सेस आर फुली यूटिलाइज्ड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड एठी हला तमर रिसोर्सेस
underutilized. So this I discussed earlier. So any point below the PP curve thus highlights the problem of unemployment, factors of production will remain unemployed, and inefficiency. Unemployment and inefficiency both will prevail in the economy if the economy is going to produce at this point, because ଆମର ପାଖେ ଯେତିକି ଲେବର ଆଉ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଛି ସେମାନେ ଓ ଏ ଆମାଉଣ୍ଟର ଗୁଡ୍ ୱାଇ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିପାରିବେ, ଓ ଡି ଆମାଉଣ୍ଟର ଗୁଡ୍ ଏକ୍ସ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିପାରିବେ। ଏନି କମ୍ବିନେସନ୍ ଅନ୍ ଦିସ୍ କର୍ଭ କୋଉଠି ବି ପଏଣ୍ଟ ନିଅ ସେମାନେ ଦୁଇଟାକ ଗୁଡ୍ ଏକ୍ସ ୱାଇ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିପାରିବେ। ତାହେଲେ ସେମାନେ ଏଠି କାହିଁକି ରହିବେ? ରହିଲେ ଆମ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ, ଆମ ଇକୋନୋମି ପାଇଁ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ସାଇନ୍, because the labor and capital are not fully employed and they are lying idle, and there is inefficient production method, that is known as inefficient production method. Now the question is that can the PP curve shift? Yes, it can shift. କେମିତି shift କରିବ? more labor ହବ, population ବଢୁଛି, more labor ହେଲା, more capital goods ହବ, better technology change ହେଇଗଲା, better ହେଇଗଲା, then in that case production of both the goods will increase. So in that case this is the increase here. Now similarly it can fall back, but which is very unlikely, fall in population ଆଉ ଏଇ ସବୁ destruction of capital stock। actually କ'ଣ ହୁଏ, टेक्नोलोजी बहुत इम्प्रूव करी जाए ओवर द टाइम। सो टेक्नोलोजी यदि इम्प्रूव कला, सेम अमाउंट ऑफ आउटपुट with less labor and capital you can produce, तम सोसाइटी से तम रिलीज करके अलग प्रोडक्शन को नहीं पार। दैट इज ऑल्सो अनदर वे ऑफ लुकिंग एट द पीपी कर्व, शिफ्टिंग ऑफ पीपी कर्व। बट एतिकी मन रख, ए गोटे डाहन को जीव माने अधिका होची आउटपुट, पछको आछी माने तमरा आउटपुट कम होची। नाउ allocation of resources, solution of central problems, two types of economic system। ମୁଁ ଏଇଟା କହୁନି ବିକଜ ମିକ୍ସଡ ଇକୋନୋମି ଆମେ ଆସିବା। market forces, some decisions are left to market forces, जोटा कि तुमर capitalist economy, आउ तुमर public production pattern of public sector, prices of items produced by the public sector, other measures are used to regulate the allocation of resources in private sector as well। so हमर जोटी economy अछि is a mixed economy। welfare measures निया होची, subsidy दिया होची, taxation करा होची, licensing करा होची, controlling the private organizations सेटा करा होची। so we have a allocation of resources is such that we have a mixed economy। प्राइवेट प्रोड्यूसर मान को हमें कंट्रोल रखुचंती और हमें रखिचु पुअर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो, दैट इज नोन एज allocation of resources, that is the solution of any central problem। so economic methodology and economic laws, economic methodology, it investigates the nature of economics as a science, it natures of assumption, then various classification, description, explanation, all these factors are there। so example, economists use the shifting of demand and supply curve to answer the question of why prices change। economic laws are also equally important for explaining all these activities here, so that I'm not going there now। what are the other things involved with the study of economics? One is inductive and deductive reasoning। deductive reason, two traditions in formulating economic laws, they are helpful for prescribing economic laws। one is deductive reasoning, तार गोटे example होची law of demand। law of demand कौन होची ना, that is a deductive, that is outcome in this case is predictable। law of demand states that other things remaining unchanged, quantity demanded varies inversely, quantity demanded varies inversely with the change in price। if price is increasing, quantity demanded will fall, if price is falling, quantity demanded will increase। so this is the example of deductive reasoning। inductive reasoning, in this case we actually use empirical information or on the field को जाओ, field रू data collect करो, like तुम्हारा consumption law, Engel's law, तुम्हारा consumption Keynesian psychological consumption theory of consumption, all these are consumption function is based on empirical information, or that is known as inductive reasoning। second concept we come across in that is in our economy, or while formulating the economy as a whole, then equilibrium is another concept। we are discussing about the economic laws or economic theories। okay, economic laws basically। so equilibrium, here there are two equilibrium is a state of not changing, is a placed state at that time where there is no intention
of any factor production or any production to change the amount of product or to change to move away from its existing position. Seta hela tomara equilibrium, a state of no change, you can say a state of no change. Partial hele kon hela gote market मनकर आम वेजिटेबल मार्केट गोटे मार्केट ता भीतर हेले पार्शियल जनरल हेले साइमल्टेनियसली वेजिटेबल मार्केट स्टील मार्केट अन्य सब मार्केट जते मार्केट सबुड़ी जदि तमर इक्विलिब्रियम डिसइक्विलिब्रियम होची सो इक्विलिब्रियम एट लिखिछि मु इज अ मीन्स ए स्टेट ऑफ रेस्ट द अटेनमेंट ऑफ a position from which there is no incentive nor opportunity to move. So general equilibrium होची simultaneously अलगा अलगा सेक्शन रे मार्केट रे एका मार्केट रे तमर इक्विलिब्रियम कंडीशन everything होथबो everything depends on everything else. Now positive versus normative economics. Positive economics is concerned with formulating economic laws and describing reality, but normative economics public finance रे प्राय आसे welfare economics रे आसीबो तुम्हारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स सेग्रीगेशन टा क्लियर हबो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स रे कोन हुए ना व्हाट ऑट टू बी व्हाट शुड बी डन by the government or कौन थेले ठीक what is ethical issues as जाए that is basically normative economics. It is concerned with what ought to be, what should be, what are the ethical situations. Now these two are type of whenever economists they deal with the problems, there is a positive economics and there is a normative economics. Similarly micro and macro. Micro means we are going to read all these micro, these are micro of a individual demand, individual consumer, individual producer, individual factor of production, labor, capital, like that. But in macro, it is aggregate. That is inflation, total employment, general level of price, total aggregate income. All these things will be studied in macro. Okay, so macro and micro, they are different in that way. Then there is another way of another thing. One should be very clear, the concept of stocks and flows. Stock is at a particular time and flows is over a time period. That is the idea. तमे बैंक रे टंका रखिलो तमे रखिलो नहीं सेटा स्टॉक हे गेला किंतु बैंक रो इन्वेस्टमेंट करी सेटा चली गला सेटा हला फ्लो हे गेला एवरीथिंग घर तमे गोटे किनिच घर पड़िछि खाली दैट इज कैपिटल तुम स्टॉक सेटा हला तमे ताके रेंट देलो कि भड़ा दे कि मास मास पैसा आसला then that is a flow. So example of flow variables are production, saving, expenditure is a flow, income is a flow जो थरे कि तमे every month, every year it is changing, basically it is changing over the time. Capital is a stock but investment is a flow. Then the concept statics, dynamics. Statics means at a point of time, this time period. Dynamic means this year's consumption is dependent on last year's income. That's the time t, like here in the example here I have taken, that is demand here, that is demand at time period t is a function of time period p at this particular, but supply of this year is a function of previous year's price and dt is equal to st. Now this is known as demand supply equilibrium, but here supply is a function of price of the price prevailing in the previous year. So in this way actually you can say that is the difference between statics and dynamics. Now this is the basic idea about the economy. Now let us come to some bigger one, the second part, that is demand and elasticity of demand. The nature of demand, desire and demand, willingness and ability to buy backed by purchasing power. That is the definition of demand. So desire backed by sufficient purchasing power is known as demand. So three important points, that is quantity demanded, it has an economic meaning, one quantity demanded, then we'll come to it later on. First is the determinant quantity demanded, then the price and consumer's income. These things will be there. Now let us say demand functions or determinants of demand. So determinants of demand for a consumer, price of the commodity. Suppose I want to buy apple from the market, so price of apple. Price of other related commodities. Suppose I like apple as well as guava, and if market guava is available, then price of guava is also going to affect my consumption. Then income of my income, then my taste. If I like guava and apple, then in the market guava is available, apple is available, so my demand for apple
will be dependent on price of good X, that is apple, price of good Y, price of good Z, say guava, orange, whatever. Y is the income and T is the taste. Now complementary goods mane kon hela, mane kar tame gote example tame niyo, that is tomara complementary good re mane kar tame neicho एठी हला कार, एठी कार संगे तमरो पेट्रोल, कार संगे पेट्रोल, कार रो दाम मन कर बढ़ी गला, कार रो दाम जदी बढ़ी गला, प्राइस ऑफ कार बढ़ी गला, जदी बढ़ी गला ताले कार रो डिमांड कमी जिवो, जदी कार रो डिमांड कमी गला ताले कोन हबो ना डिमांड फॉर पेट्रोल रो डिमांड कोन हबो, पेट्रोल रो डिमांड टा कमिबो ना बढ़िबो, जदी कार रो डिमांड कमी गला पेट्रोल रो डिमांड टा कमिबो. So here this is an inverse relationship between price of the given commodity and the price of the complementary commodity, purchase of the complementary commodity. So if price of good X is increasing, then quantity demanded of good Y is falling. That is the inverse relationship, bears an inverse relationship with the price of the complementary good. Okay, so substitute good kon hela, manga bread butter complementary gala, tea and coffee. Tea ro price of tea manakara बढ़िला, ताले quantity demanded tea टा तमरा कमिला, यदि quantity demanded tea कमिला, quantity demanded of coffee तमरा बढ़िबो. So if price of tea is increasing, the substitute goods demand is also increasing. This is the substitute good. These two here, tea and coffee, are substitute goods. So direct relationship here. The bears a direct relationship with the price of the substitute good. Okay. So this is the example of, one is inverse relationship, the other one is substitute goods. Now determinant of demand in a market. Market re kon habo, size of population, income distribution, ଆଉ market ରେ ଦି ତିନିଟା consumer ଏକାଠି ହେଲା. ମୋର example ଦେଖିବା, ଏଠି ଗୋଟେ example ଅଛି, ଏଟା ହେଲା law of demand, plain demand, law of demand, demand schedule, that is the ତମର ଗୋଟେ table କରିଛି, price ତମର apple ର ବଢି ଚାଲିଛି, quantity of apple ତମର କମି ଚାଲିଛି. Now the demand curve is actually an inverse related, and that is why it's either straight line hobo or empty hobo, that is a rectangular hyperbola. Empty demand curve hobo, downward sloping demand curve kwa jaye, downward sloping demand curve or negatively sloped demand curve. Kaiki na mane karo tomara price of good X, I am discussing korche good X, price of X is falling, then quantity demanded of X is increasing, price of good X is increasing, then quantity demanded of X is falling. One is increasing, the other one is falling. So there is opposite relationship. So if this one is falling, the other one is increasing. So that is why it is inverse relationship. So, and that is why the curve is a negative. Basically it is negatively sloped, and the curve is either this way or straight line. But usually we use this type of demand curve. Straight line is a kind of is there, but usually this is the downward sloping demand curve. Now market, what the moniker, suppose there are dita market ଅଛି, dita household ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ A ଅଛି ଗୋଟେ B ଅଛି, ସେଇ ଏକା ପ୍ରାଇସ୍ 3 ରେ A household ଚାରଟା डिमांड କରୁଛି क्वांटिटी, ଗୋଟେ ମନେକର apple ର, B डिमांड କରୁଛି 5ଟା, ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ମାର୍କେଟ ରେ 9ଟା डिमांड କରୁଛନ୍ତି 3 ଟଙ୍କା ପ୍ରାଇସ୍ ରେ, 4 ଟଙ୍କା ବେଳେ ଦିଅ ଯାକ ଟୋଟାଲ ଦି ଜଣ ମିଶିଲେ ମନେକର ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ ହଉଛି, ତାହେଲେ ମାର୍କେଟ डिमांड इज नथिंग बट द होराइजंटल समेशन. ग्राफ रे कलो, फर्स्ट है तुम्हारा डिमांड शेड्यूल, सेकंड है तुम्हारा डिमांड कर्व और डिमांड ग्राफ, then third है तुम्हें determinants of demand. We can discuss that. So now this is the market demand curve. This is the horizontal summation of demand curves of A and B. से एक का example टा इट से ग्राफ रे करिछि देखियो हैला. So why does a demand curve slope downward? Next question है, आमे जो कहूछु straight line हो कि curve हो, demand curve is sloping downward. Why does it slope downward? Number one है substitution effect. ता माने the change in relative price of a commodity causes substitution effect. माने करो मार्केट रे पेप्सी अछि, कोक अछि, दीटा का दाम 20 टका थिला,
हठात कोक्र दाम 25 टंका होगा तुमको लगे जारे पेप्सीटा सस्ता अच्छी मो कोक्र दामटा बढ़ीगला कोक कॉस्टली है कहबनी तुम कह पेप्सीटा सस्ता अच्छी सो पेप्सी इज चीपर दो देर इज नो चेंज इन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पेप्सी और देर इज नो चेंज इन प्राइस ऑफ पेप्सी सिमिलरली प्राइस ऑफ मैंगो फॉल्स एंड प्राइस ऑफ अदर फ्रूट्स रिमेनिंग अनचेंज्ड मैंगोर दाम कमीगला अन्य मैंने जहाँ जमती थिला सेमती अच्छी तुमको लगे मैंगो सस्ता हो गला से psychological or behavioral pattern of the consumer so substitution effect immediately मोर टेंडेंसी रहिबो सस्ता जोटा हेबो ताको बेसी किनिया पे अरे सस्ता है ठीक अधिका किननो मार्केट दैट इज नोन एज substitution effect इनकम इफेक्ट व्हाट हैपेंस मन कर मु 200 टका नै कि मार्केट को जाउथली 10 किलो एप्पल किनुची है 10 किलो एप्पल किनुची काली जाई मार्केट रे देखिली एप्पल 200 टका 10 किलो वाला माने मोर 20 टका काली जाई कि देखिली जे मोर 10 टका हेची एप्पलटा ताले मु सेही 10 किलो को 100 टका किनिबी बाकी मो पाखे 100 टका बळिबो और मोर रियल इनकम टा बढ़ी गला दैट इज इनकम इफेक्ट सो इनकम इफेक्ट इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स the real income of the consumer changes it in our example jo deli ethire increase kala so the rise in real income with a fall in price is called the income effect tale jodi gote jinsar dam kami gala ताहले इमिडिएटली कौन होची ना से जिनसटा चीपर होची किंबा अन्य जिनस तुलना रे चीपर होची दैट इज सब्सटीट्यूशन इफेक्ट एवं मो निज इनकम भी मु चाहिए आहुरी अधिक एप्पल किनी परिबी किंबा चाहिए अलगा जिनस भी किनी परिबी जदी एप्पल प्राइस कमी गला देन दैट इज नोन एज इनकम इफेक्ट इनकम माने मनी इनकम एठी हमें कहूना हम कहू रियल इनकम टा बढ़ुची द प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू substitution effect plus income effect so given the substitution effect actually is always negative बोले हमें धरू काहे ना यदि जिनसटा चीपर हो जाई प्राइस कमी ची हमें ऑब्वियसली सेटा अधिका किनिबा इनकम इफेक्ट पॉजिटिव नेगेटिव हे पारे पॉजिटिव भी हे पारे मन कर पॉजिटिव हबो इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स हम परे आसीबा इनकम इफेक्ट पॉजिटिव हो नॉर्मल गुड मोर इनकम बढ़िला गुड्स टा गुड नॉर्मल अछि मु अधिका किनिबी then that is known as positive income effect रे तमे कोन करिवो ना तमरो इनकम एपटे नैच मन कर इनकम गुड्स नैच तमे बड़ी चलिबो ओके बड़ी चलिबो सो द इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव इंफीरियर गुड मन कर गोटे जिनस मते एते भलो लागेनी किंतु मो पाखे एते सुविधा नै किनिबा हला ताले सेही केस रे कोन हबो ना द लॉ ऑफ डिमांड विल स्टिल अप्लाई दैट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व दैट विल अप्लाई provided substitution effect is actually outweighing the income effect substitution effect is outweighing the income effect केते बडा बही रे substitution effect को पॉजिटिव इनकम इफेक्ट को नेगेटिव लिखा होची केते बडा बही रे substitution effect को पॉजिटिव इनकम इफेक्ट को नेगेटिव लिखा होची किंतु माइंड रे देखो substitution effect माने गोटे जिंस प्राइस कमिले ता जिंस बढ़ुची नेगेटिव पॉजिटिव एठी जो कांसेप्ट ता हमर नुह जे माइनस प्लस नेगेटिव पॉजिटिव होची मूवमेंट गोटे मूवमेंट तळ आड़ बोले आरो मूवमेंट ऊपर आड़े होची अपोजिट डायरेक्शन सेटा हला तुमरो नेगेटिव पॉजिटिव हमें कहूछ सेम डायरेक्शन सेटा हमें पॉजिटिव कहूछ सो जदी इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव अछि किंतु सबस्टिट्यूशन इफेक्ट इज स्ट्रांगर देन इन दैट केस inferior good case रे कोन होबो ना law of demand ता तुमरो downward sloping होबो law of demand ता downward sloping hobo in case of inferior good but in case of inferior commodity if income effect is negative the law of demand will not apply provided IE outweighs the SC IE is much higher IE outweighs the SC in that case that will be upward sloping demand curve which is known as Giffen good Giffen good. This was a paradox, Giffen paradox. It was observed in London, England, and by Giffen. So that is why it is known as Giffen good. Giffen good is an inferior good, but all inferior goods are not Giffen good. Remember that. So normal good, inferior good, some inferior goods are Giffen good. So in case of Giffen good, the law of demand does not apply. Okay. Now change in quantity demanded and change in demand देखो change in quantity demand रे कौन होची तमे you the movement is on the demand curve if price is changing then quantity demand remember right hand side रे quantity demanded x axis रे आउ price y axis रे price नि आइची हमर usually हमें independent variable टा x रे नो आउ dependent variable टा y रे नो किंतु इकोनॉमिक्स रे conventionally सब बड़े the dependent variable टा देखो तळे जाईची independent variable टा एठी जाईची सेटा मूलर सेमती कन्वेंशन नि आइची चेंज करले भी बेसी किछि चेंज हबनी से एका डाउनवर्ड स्लोपिंग हबो
से फास्ट है तुम चेंज इन डिमांड इंक्रीज इन डिमांड and increase in demand and one is decrease in demand okay एठी केतोडा बहरे देखिबो increase in quantity demand रे लिखाइ छि आउ decrease in quantity demand रे लिखाइ छि हला दीटा फॉर्म रे आसिला increase in demand and decrease in demand जोटा कि एठी से एग्जांपल दोछि बट बेसी भलो हबो तमे यदि लिखिबो एटा increase in quantity price fall कला increase in quantity demanded हला लिखिले बेस बेटर हबो एई जगह रे चेंज इन डिमांड होछि एई जगह रे चेंज इन से एका प्राइस रे तमे अधिका अधिका डिमांड कर तम इनकम बढ़ी गला तम टेस्ट चेंज हे गला तम सडनली जिंसटा ब्रांड चेंज हे गला देन इन दैट केस दैट इज नोन एज चेंज इन डिमांड some of the factors responsible for the shifts in demand curve right hand side jibo यदि money income बढ़िला right hand side को shift करिवो यदि price substitute good रो price ता तमरो बढ़ी गला ताले तमे यार डिमांड तमरो अधिका हे जिवो किंबा कॉम्प्लीमेंटरी गुड रो प्राइस रे तमरो कमी गला ताले तुम राइट वर्ड शिफ्ट हबो डिमांड कर्व रो सेमती तमे यदि टेस्ट प्रेफरेंस तमरो चेंज हे गला ता पॉजिटिवली जे जिनसटा को अधिका किनिया चाहला ताले राइट वर्ड शिफ्ट हला सेमती लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हबो कोन डिक्रीज इन मनी इनकम हबो आ डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स हबो और इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंटरी गुड हबो कंज्यूमर रो टेस्ट नथिबो तापति लो लेस आई मीन इज नॉट डजंट लाइक दैट commodity at all so that case leftward shift habo so shifting in demand curve is example ta ethi achi ei jo shifting ta due to different reasons those reasons as I told you earlier in the next slide and here it is due to change in price due to change in price change in quantity demanded left hand side ta right hand side ta hochi change in demand but बही रे केते जगह increase in demand in decrease in demand लिखा होछि but better हबो increase in quantity demanded decrease in quantity demanded left hand side पाई right hand side पाई increase in demand decrease in demand तीनटा reason factors responsible for shift in demand कर पहिले एबे आसीबा हमें price elasticity of demand price elasticity of demand तमरो कोन होछि ना change that is the degree of responsiveness of change in quantity demanded due to a change in price due to a change in price सेटा तमरो आसी गला elasticity concept of elasticity of demand आसी गला that is पूर्व गोटे change in quantity demanded रे higher quantity due increase in demand yes correct okay now this is concept of elasticity of demand first degree of responsiveness of change in one variable due to change in another variable that is elasticity of anything elasticity of demand कहले हमें कहबा price और quantity demanded so price elasticity of demand हला proportionate change in quantity demanded delta q by q केते बडा actually percentage change भी तमे कहि परिबो percentage change in quantity demanded you can say that way also percentage change in quantity demanded divided by this is the proportionate change in price so price elasticity of demand is equal to delta q by q into divided by delta p by p आको जदि हम उल्टे दबा delta q by delta p तळको आनिबा into ऊपर एटा तळको अछि डिवाइड अछि into एटा उल्टी जीव ऊपर पळेबो p by q we can write down elasticity price elasticity of demand is equal to delta q by delta p into p by q एटा हला तुमरो change in quantity and change in price एटा हला तुमरो original price और original quantity हला एटा हला तुमरो price elasticity of demand price elasticity of demand you can write down proportional change book रे भी अछि proportional change in quantity demanded divided by proportional change in price this is known as elasticity of demand जोटा कि हम लिखि परिबा del q by del p and बंका काई खोज जानि पानी is equal to sorry into p by q this is equal to ep you can write this way or you can write this way also you can write this way जोटा भी तुमको सुविधा हबो किंतु एटा होचे स्टैंडर्ड हमर एटा स्टैंडर्ड अछि एठी आसीबो हैला वर्तमान हमें देखिबा एठी हमें देखिबा जे कोन हमर चेंजेस होची वर्तमान देखिबा गोटे होची इन्फिनिटी हे परिबो इन्फिनिटी हला केते बळकू
ना तुमर जदि डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू अच्छी तो दिस इज इक्वल टू ईपी एटा केतेबेले इनफिनिटी हबो जेतेबेले तळटा ऑलमोस्ट जीरो हबो डेल्टा पी ऑलमोस्ट जीरो हबो चेंजेसटा ऑलमोस्ट जीरो हबो सेतेबेले तुमर इनफिनिटी हबो तार माने हैला टिके भी चेंज प्राइस रे हेइनी किंतु गोटे बहुत बड़ चेंज क्वांटिटी रे हेइ जिवो सेटा हला तुमर इनफिनिटी सो इनफिनिटी दिस टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑब्टेन्स ए स्मॉल चेंज इन प्राइस गोटे छोटिया चेंज हला प्राइस रे बहुत बड़ चेंज इनफाइनाइट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एटा तुम एमती कहि परिबो आ गोटे हला एमती तुम कहि परिबो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज a situation in which it is not possible to determine the quantity that would be demanded at a given price. This type of demand is also, this is known as perfectly elastic demand. Perfectly elastic demand, which is parallel to x-axis. Parallel to x-axis. It is a quantity, it is a price of x. Now parallel है तो perfectly elastic demand. It is सेमती देखो एठी कौन होची ना डेल्टा Q by डेल्टा P multiplied by P by Q आमे कहूचे तो एठी देखिबा प्राइस रो जेते चेंज हेले भी quantity demanded टा किछि चेंज होनी. So this is almost zero. So here you can write down elasticity of demand, price elasticity of demand is equal to zero. Here it is perfectly inelastic demand. Perfectly inelastic demand. Okay. Now similarly, I mean the delta Q by delta P into P by Q is equal to 1. यार माने हैला delta Q by Q is equal to delta P by P. एट जगह तुम आसीगला जी चेंज प्रोपोर्शनल चेंज प्राइस रे होची सेतिकी चेंज क्वांटिटी डिमांडेड होची सो इट हला यूनिट इलास्टिसिटी और यूनिटरी इलास्टिसिटी सो एनीथिंग मोर देन जीरो हला तुमर जीरो हला तुमर हाईली दिस परफेक्टली इनइलास्टिक एटा हला यूनिटरी इलास्टिक एटा हला तुमर परफेक्टली इलास्टिक एठु या भितरे जे गला इलास्टिक एठु या भितरे जे गला इनइलास्टिक नेगेटिव साइन तुमर रहिला नेगेटिव साइन तुमर रहिबो बिकॉज इनवर्स रिलेशनशिप नॉर्मल गुड रे थिबो ताकू ओमिट करके तमे एब्सोल्यूट वैल्यू रो देखिबो हैला ताले आउ कोन रहिला जीरो गला इन्फिनिटी गला 1 गला आ गोटे हैला तुमर इलास्टिसिटी एटा गोटे आ गोटे हैला तुमर ग्रेटर देन 1 गोटे गला आ गोटे तुमर आसिला लेस देन 1 if p is less than 1 0 is less than ताले हमर आसिला गोटे हैला इन्फिनिटी गोटे आसला तुम ईपी है तुम 0 गोटे ईपी है इनफिनिटी दीटा गला गोटे ईपी है तुम ईपी है तुम 1 तीनटा गला आ गोटे ईपी इज ग्रेटर देन 1 हम लेस देन इनफिनिटी आ गोटे ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 एति कंडीशन आसला एटा हला तुम इलास्टिक बहुत हाई है हाईली इलास्टिक एटा हला तुम इनइलास्टिक टुवर्ड्स 0 है हाईली इनइलास्टिक एटा हला परफेक्टली इनइलास्टिक एटा हला परफेक्टली इलास्टिक से अनुसार ग्राफ भी तुमर बदलिबो तुमर 1 जो हबो 1 रो डायग्राम टा कोन हबो ना तुमर एमती गोटे दिबो 45 डिग्री आ परे नेक्स्ट पडिबा आ तुमर जदी इलास्टिक हैला डिमांड कर्व टा एमती हबो हैला इलास्टिक इनइलास्टिक हैले डिमांड कर्व टा एमती आसीबो ठीक है स्टीफ आसीबो so depending on price elasticity of demand the graph will change एटा हला परफेक्टली इलास्टिक गोटे हला परफेक्टली इनइलास्टिक हला जदी हम डायग्राम रे देछि आरो गुडा कहूची टिके टुवर्ड्स y एक्सिस असले तुमर इनइलास्टिक हाईली इनइलास्टिक आ हाईली इलास्टिक जदी away from y axis होची then unitary is equal to 1 that is delta p सेटा हम परे देखिबा आसीबा okay so in interpretation of price elasticity coefficient हम सेमती कहिले बतन कोन करबा ना तमर नेक्स्ट आसीबा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हाट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कोन होची सेमती हम लिखिबा change in quantity demanded proportionate change in quantity demanded division divided by y y stands for income y stands for income okay एटा ला क्वांटिटी एटा मनकर तमरो e y you are writing e y of a particular good so delta q by delta y into y by q this is the elasticity e I लिखुची बहिरे I लिखिची केतोडा बहिरे y लिखाई छी तमे डिफाइन करबो तमे लिखिबो I is equal to income भी लिखि परिबो I is equal to income लिखि परिबो आज जा बळिबो काली पढिबो से विषय रे बिकॉज़ अदरवाइज नले तमे असुविधा हबो सो इनकम इलास्टिसिटी कैन बी नेगेटिव कैन बी पॉजिटिव
or can be zero. Here तमे nature of good विषय तमे जानिबो, that is तमर आसीबो कोन nature of the good ना तमे commodity normal good की नहीं, commodity तमर inferior good की, commodity तमर no relationship between the income and the commodity सेटा हला तमर zero, no relationship. यदि negative हला then in that case आमे कौन करिबा ना एटा हला तमर inferior good काहे ना income बढ़िले मु कम डिमांड कली, positive हला then that is a normal good. एटा हला nature of the good रे आमे आसी परिबा. नेक्स्ट आसिले सेमती क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस. क्रॉस इलास्टिसिटी प्राइस मन को दीटा गुड अछि x and y. चेंज इन क्वांटिटी ऑफ x, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ x due to change in price of y, price of y, that is the idea. ताले हमें केमती लिखिबा क्रॉस इलास्टिसिटी is the proportionate change in quantity demanded of x divided by proportionate change in price of y. ताले delta qx by qx divided by delta py by py. एटा हला तुमरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बही रे लिखुची e qx py लिखुची बही रे इज इक्वल टू लिखुची. This can be written delta qx by delta py into py by qx. एटा हला तुमरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और प्राइस क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. This is known as price cross elasticity of demand. ओके, तापर हम आसी जिबा मेजरमेंट. मेजरमेंट रे पॉइंट मेथड और परसेंटेज मेथड जोटा कि हम ऑलरेडी डिस्कशन कले. सेकंड होची टोटल एक्सपेंडिचर मेथड हम डिस्कस करिबा. थर्ड होची ज्योमेट्रिकल मेथड. एटा देखो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड रे देखो एठी कोन हेची ए एग्जांपल रे 20 5 प्रथम एग्जांपल रे एटा 100 अछि 100 एक्सपेंडिचर चेंज हेनी. सेकेंड केस रे देख क्वांटिटी डिमांडेड 20 जगह 22 बढ़ी गला ताले प्रथमे थिला 100 तापर हैला 88 एठी कम हैला खसिला. एठी कोन हैला 100 थिला एठी 120 थिला एठी बढ़िला एठी इंक्रीज कला ताले टोटल एक्सपेंडिचर इज रिमेनिंग अनचेंज्ड. एटा हला तमर इलास्टिसिटी तमर एक्सपेंडिचर मेथड रे कैलकुलेट करले एटा हला तमर इलास्टिसिटी यूनिटरी इलास्टिसिटी. एटा तमर जदी 100 जगह रे 88 तमर बढ़ला टोटल आउटले तमर कमी गला देन इलास्टिक आ जदी बढ़ी गला तुमरो इलास्टिक. ताले टोटल एक्सपेंडिचर मेथड रे हमें कोन करिबा ना सेमती लेस देन यूनिट प्राइस इलास्टिसिटी हम कहि परिबा, मोर देन कहि परिबा. ज्योमेट्रिकल मेथड को हमें आसीबा आ गोटे मेथड. ज्योमेट्रिकल मेथड रे लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व सेटा हला तुमरो ज्योमेट्रिकल मेथड. ताले मझी पॉइंट हरा पूरा मझी AC इज इक्वल टू CB. ताले CB बाय AC, CB बाय AC is equal to 1. ओके, याडू को जते जीवो एटा हला 0, याडू को जते जीवो सेटा हला तुमरो इन्फिनिटी. ये हला हमर ज्योमेट्रिकल मेथड. ताले ज्योमेट्रिकल मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड आ गोटे मेथड तुमको कहली दैट इज तुमरो पॉइंट मेथड. अच्छा, नेक्स्ट आसीबा हमर कोन ना यूनिट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. एठी कोन हबो दिस इज नोन एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. मन करे एई पॉइंट नै जेटा O एटा नै जे P एटा हला Q. ओके, OP1 OQ1, OP1 multiplied by OQ1 will be equal to suppose a point नहीं जाए point A point B. OP2 quantity demanded is Q2 will be equal to OP2 into OQ2. So every point on this curve the area is same. That is area माने length into breadth दैर्घ्य प्रस्थ मिसिले एटा को कहंती रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो पटे भी तमे जीवो एटा यूनिट 1 हेकि रहला या एरिया इज इक्वल टू या एरिया हेकि रहला हैला. टाइम हे गेला बदे हमरो. थैंक यू. नेक्स्ट क्लास रे डिटरमिनेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को टिके पढेबा एंड नेक्स्ट यूनिट आरंभ करबा. थैंक यू.